Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rafael BB College, Vapi, and I am going to teach you elements of strategic management subject. Now, in last video, we discussed about what is organizational analysis and the role of the organizational analysis. What mean by organizational analysis? It is a process through which organization can evaluate its capability. Now, evaluate its capability in terms of what? Evaluate the strength and the weaknesses of the various internal factors so that the organization can have competitive advantage at the marketplace. Okay, so today in this session we will discuss the next topic, that is process of organizational analysis. Clear? Now the process is undertaken so that organization reach at a point at which it can undertake the strategic actions in the light of the strength and the weaknesses, because the main main objective of organizational analysis is what? To evaluate the strength and the weaknesses of the various internal factors. That is what? Evaluate the strength and the weaknesses of the various internal factors. Okay, so organization ये process organization analysis क्यों कर रहा है process? It is undertaken so that organization reach at a point at which it can undertake the strategic action in the light of the strength and the weaknesses. Now this process consists of the 5 steps. First is what? Identification of key factors for analysis. Then assessing importance of the key factors, assessing the strength and the weaknesses of the key factors, preparing OCP, that is organizational capability profile, and last is what? Relating organizational capability to strategy. Now एकदम सिंपल है. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर्स फॉर एनालिसिस, मतलब क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की की फैक्टर्स है, दैट इज इंटरनल फैक्टर्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड में क्या करोगे? असेस करोगे इंपॉर्टेंस, बिकॉज हर एक इंटरनल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट? असेसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द की फैक्टर्स. थर्ड, असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ द की फैक्टर्स, यानी जो भी इंपॉर्टेंस फैक्टर्स है हर एक का स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस को असेस करो. फोर्थ में क्या करना है? प्रिपेयरिंग ओसीपी, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द ओसीपी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल. एंड लास्ट, relating organizational capability to strategy, and whatever strength it is utilized for preparing or formulation of the strategy. So this process we learn in detail one by one. First is what? Identification of key factors. Now organizational analysis process should start with the identification of key factors that can be evaluated for determining the strength and the weaknesses. So first step में क्या करना है? We have to identify the key factors for the purpose of evaluating the strength and the weaknesses. So this analysis should cover all aspect of the organization. Now all aspect of the organization, that means what? These factors may be in the area of the organization structure and management pattern. Okay, personnel department, finance and accounting department, marketing, okay, manufacturing, research and development department, and so and so. That means what? We have to identify all key factors, यानी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंटरनल फैक्टर्स है, हर एक इंटरनल फैक्टर्स को क्या है? आइडेंटिफाई करना है एट द फर्स्ट स्टेज. क्लियर? सो विच आर दे? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन मैनेजमेंट पैटर्न, personnel, finance and accounting, marketing, manufacturing, R&D department, and so on. That is what? Identification of key factors. Second step, assessing importance of the factors. Now all the factors which is identified for the purpose of analysis, for this purpose of analysis may not have the equal strategic importance. agree ना? यानी जितने भी फैक्टर्स हम लोग ने फर्स्ट स्टेप्स में आइडेंटिफाई किया, हर एक फैक्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है फॉर द एनालिसिस. दैट मीन्स व्हाट? सम फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट while others are what? Less important. Okay, and we all know that the relative importance of the factors depends on nature of the organization and its environment. आया समझ में? Okay,
Now, their relative importance can be determining by finding out the contribution of each factors in the achievement of that key results. Okay, so key result area for the organization is what? It is defined on the basis of the organizational objective towards which total efforts are directed. Now simple term है assessing importance of the factors मतलब at the first stage we have to identify all the key factors. Okay, so second step में क्या करना है? We have to assess the importance of the factors and whatever factors identified at the first stage, all the factors are not equally important for analysis. Some factors are more important than some factors are the less important. Now ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट. टेक एन एग्जांपल, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ज्यादा कौन सा फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ओके, एंड कस्टमर रिलेशनशिप. वेयर एज जो मैन्युफैक्चरिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट है. क्लियर? अनदर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी. उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. ओके, सो पर्सनल मार्केटिंग को हम लोग लेस इंपॉर्टेंस काउंट करेंगे. सो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट. सो एट द सेकंड स्टेज we have to assess importance of the factors. Now at the third stage, assessing strength and the weaknesses of the key factors. Now the identification of these key factors may lead to the assessment of the organizational strength and the weaknesses in respect of these factors. Okay, यानी जितने भी factors को हम लोग ने assess किया according to the importance. Okay, now ये इंपॉर्टेंट असेस करने के बाद what we have to do? We have to assess the strength and the weaknesses of the key factors. That means what? मार्केटिंग एरिया में क्या strength and the weaknesses है, फाइनेंस एरिया में क्या strength and the weaknesses है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या strength and the weaknesses है. That is what? Assessment of organizational strength and the weaknesses in respect of these factors. Now what do you mean by strength? Organizational strength on any factors can be defined as what? Contribution made by the factors towards the achievement of organizational objective. Okay, simple सा term है ना. Strength किसको माना जाएगा? Those area which provide the positive contribution for the achievement of the organizational objective can be considered as what? Strength. So weaknesses क्या होगा? Organizational weaknesses on the factors can be defined as what? Negative contribution of the factors in achieving the organizational objective. Take an example, in an organization, manufacturing sectors, manufacturing department, that is production department, performing much more well. Okay, whereas जो marketing department है वो अच्छे से perform नहीं कर रहा है. So marketing department क्या कर रहा है? Negative contribution दे रहा है for the achievement of the organization objective. So, okay, so marketing department can be termed as what? Weaknesses. But जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दैट इज टर्म इज व्हाट? स्ट्रेंथ. क्लियर? नाउ अनदर वे फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस इज व्हाट? टू मेक द कंपैरेटिव एनालिसिस. ओके, फर्स्ट में हम लोग ने क्या किया? फर्स्ट में हर एक डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस आइडेंटिफाई किया. अनदर वे क्या है? We have to assess the strength and weaknesses in order to make comparative analysis of these factors with those of the competitors. यानी हमारे internal factors को compare करना है with the our competitors. Take an example in case of Maruti. Okay, Maruti has a wide range of product. Okay, so wide range of product, it is what? Strength as compared to the competitors. यानी मारुति के मैनेजर्स क्या एज्यूम करता है कि हमारी जो कार के अलग अलग वेराइटीज है वो वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज है, वेरएज हमारे कंपटीटर्स के पास इतनी अच्छी नहीं है. ओके, आफ्टर सेल सर्विसेज, मारुति एज्यूम दैट कि हमारा जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, इट इज मच मोर बेटर एज कंपेयर टू द कंपटीटर्स. वो अपने आफ्टर सेल सर्विसेज को वो स्ट्रेंथ मानता है. सो at the third stage we have to assess the strength and the weaknesses of the key factors. Okay, so
कौन से बेसिस पे मेजर होगा? फर्स्ट, मैनेजमेंट खुद अपने डिपार्टमेंट को एनालाइज करेगा और वो देखेगा कि कौन सा फैक्टर्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कैन बी टर्म एज व्हाट? स्ट्रेंथ। इन कौन से फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, कैन बी कंसिडर एज व्हाट? वीकनेसेस। एंड अनदर area is what? We have to assess the strength and the weaknesses in comparing with the competitors activity. Clear? So at the third stage we have to assess the strength and the weaknesses. Now at the fourth stage we have to preparing organizational capability profile. यानी once organizational analysis activities is undertake, okay, that is what evaluation of the strength and the weaknesses is over, then this result must be presented in a structured form, systematic way में present करना है. For this purpose organization prepare this profile, that is organizational capability profile. So on the basis of the assessment of the strength and the weaknesses, organizational capability profile is prepared. Okay, now this profile show the strength and the weaknesses in terms of degree, either in terms of qualitative term, that is 1 to 5, and quantitative term, that is 1 to 5, and the qualitative like very strong to very weak. Okay, now in between 2 3 4 को क्या बाइपोलर एक्टिविटी बोल दिया, कुछ हम लोग को एज्यूम करना नहीं, यानी जस्ट वी हैव टू एज्यूम 1 is what? Very strong. Okay, जो यहाँ पे जो लिखा है 1 to 5, so 1 can be considered as what? Very strong, and 5 can be considered as what? Very weak. Okay, so जो भी ये प्रोफाइल हम लोग बनाएंगे, that is organizational capability profile, उसमें strength and weaknesses को measure करना in terms of degree. डिग्री मतलब कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितना ज्यादा वीक है. ओके, एज एग्जाम्पल 1 को मैं एज्यूम करता हूं वेरी स्ट्रांग 1. सो 2 क्या होगा? स्ट्रांग. 3 क्या होगा? न्यूट्रल. 4th क्या होगा? वीक. एंड 5th क्या होगा? वेरी वीक. So we have to measure the degree in terms of qualitative term and the quantitative term. Now, when both the strength and the weaknesses are taken in the same profile, यानी हम लोग को एक ही प्रोफाइल में strength and the weaknesses measure करना है, then the positive number can be used for the strength and the negative numbers can be used for the weaknesses if quantitative measurement is undertaken. Clear? यानी जस्ट एज्यूम कि इन केस ऑफ मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग को नंबर दे रहा हूं +2 यानी इट इज स्ट्रॉन्ग, यानी हमारे लिए स्ट्रेंथ है. ओके, मैं HR को -1 दे रहा हूं यानी इट इज वेरी वीक एरिया. क्लियर? सो वेरी वीक मतलब वेरी वीक एरिया. सो वेरी वीक मीन्स व्हाट? इट इज अ वीकनेस हुआ. That is what? Strength, that is what? Weaknesses. Clear? So अगर strength and the weaknesses एक ही टेबल में आप प्रेजेंट करो तो पॉजिटिव नंबर को आप यूज करोगे एज अ स्ट्रेंथ एंड द नेगेटिव नंबर कैन बी यूज एज अ वीकनेसेस. क्लियर? नाउ यहां तक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एक्सरसाइज और प्रोसेस ओवर हो जाएगा. ओके, नाउ ये सेकेंडरी पॉइंट है, दैट इज रिलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी टू स्ट्रेटेजी. Now technically this is not the part of the organizational analysis. However, organizational analysis is meaningless unless it provide a way to relating the strength to its strategy. But obvious ना कि अगर खाली organizational analysis किया, that means what? Manager can come to know about the strength and the weaknesses of the various key factors. मैंने प्रोडक्शन में क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, मार्केटिंग में क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, HR में क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है. ना ये खाली स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जानने से कुछ नहीं होता है. सो मैनेजर को क्या करना है? रिलेट करना है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी टू स्ट्रेटेजी. ओके, इसीलिए बोला जाएगा कि जो ये स्टेप्स है टेक्निकली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. हाउएवर ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एक्टिविटी इज मीनिंगलेस unless it provide a way of relating the strength to the strategy. So assume कि in case of production
ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रेंथ. ओके, सो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करेगा फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी. तो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेगा, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बना दो कि हमारा R&D डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारा स्ट्रेंथ है, सो हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, यानी वी आर एडिंग द न्यू न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. क्लियर. अनदर एग्जांपल, एज्यूम के इट इज स्ट्रेंथ इन मार्केटिंग एरिया, उसकी मार्केटिंग एरिया में भी स्ट्रेंथ है, तो वो क्या करेगा, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी यूज कर पाएगा. ओके, चलो फर्स्ट हम लोग गुजरात को सर्व करते थे, अभी राजस्थान को भी सर्व करेंगे, महाराष्ट्र को भी सर्व करेंगे. हम लोग खाली नॉर्थ रीजन को हमारा मार्केट था, अभी हम लोग साउथ में भी मार्केट डाल देंगे, बिकॉज वी आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन मार्केटिंग एरिया. सो फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, रिलेट करना ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी टू द स्ट्रेटेजी. क्लियर. सो दिस आर द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. सिंपल सा. फर्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है की फैक्टर्स, यानी मार्केटिंग प्रोडक्शन HR को कर दिया, की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया. सेकंड में क्या करना है, असेसिंग द इंपॉर्टेंस, बिकॉज हर एक फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, सम फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, अदर्स आर व्हाट, लेस इंपॉर्टेंट. थर्ड में क्या करना है, एट द थर्ड स्टेज असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस, यानी जितने भी फैक्टर्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया और उसका इंपॉर्टेंस को देख के हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ दिस फैक्टर्स. फोर्थ में जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल. एंड फिफ्थ में क्या करना है, वॉट एवर स्ट्रेंथ है उसको रिलेट करना है विद द स्ट्रेटेजी. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. Clear. Now in next video we will continue our topic. Now take care.